नमस्कार गुड इवनिंग 2002 कुमार पूर्णिमा उत्सव मोर MI-OSA तरफ समस्त हार्दिक शुभेच्छा और स्वागत करुच्ची। आम यूएस आम परिचय ओडिया भारतीय ये भावना ही आम समस्त को बांधि रखी से आम संस्कृति भाषा खाद्य और संगीत और नृत्य को यही उत्सव माध्यम उपभोग करूँ। आम आम सांस्कृतिक कार्यक्रम आग को नेबा पूर्व मु डॉक्टर जोगेश पंडा कृष्ण सेनापति और पुष्पा को अनुरोध करुच्ची दयाकोरी स्टेज को आसतु। प्राय समस्ते जानिछन जे डॉक्टर श्रीनिवास महापात्र आम गहन नहांती ये खबर कम्युनिटी प्राय समस्त मन एक अपूरणीय विषादर छाया खेली जाइछि। डॉक्टर जोगेश पंडा कृष्णाराणी और पुष्पा प्लीज से समथिंग अबाउट डॉक्टर श्रीनिवास महापात्र जे कि आमर बहुत सीनियर मो पाखरे सेते किछि इन्फॉर्मेशन बेसी किछि इन्फॉर्मेशन नाही। पुष्पा को प्रथम कहूछि से ताका विषय किछि कोन। आज कुमार पूर्णिमा संध्यार मु डॉक्टर श्रीनिवास महापात्र बाबू मेमोरी उद्देश्य दीपद कहवाक जाऊे। आपण मैंने समस्ते सहित अल्प बहुत परिचित। मु गत 25 वर्ष हेब परिवार को जानी। सी जड़े कलाकार और कलार पुजारी ओसा एसोसिएशन रिवाइव करी पुणी नुआ ओसा कंटिन्यू करिबारे तांकर अवदान अनेक। प्रति प्रोग्राम ओसार महापात्र बाबू गोटे फादरली फिगर गार्ड परी से भीतर न रही बाहर वाच करुथांती। आर्टिस्ट ग्रुप ओडिशा रु आनिबा और सेमानंको खूब आदर यत्न करी रखिबा पे से बहुत आनंद उपलब्धि करती। से जने साइकेट्रिस्ट हिसाब रे अनारबर और वेटरनरी हॉस्पिटल रे सुपरिचित। बहुत साइकेट्रिस्ट रेसिडेंट तांको अंडर रे ट्रेनिंग पाइछंती। मो पो चंदन मध्य जणे सेमानंको कहिबा अनुसार ही इज अ स्ट्रांग mentor and a teacher, fondly, friendly. तांको सहित गोटे दिन एडवाइस लाइफ टाइम मने रहिबो। से केवल पाठ शिखाउ नथिले, हाउ टू डील विथ रियल वर्ल्ड से समस्त को सिखाई थिले। तांकर सुनाम अनेक। तांको आत्मार सद्गति सहित तांको पत्नी रीना पुआ राहुल अरुण और तांको भगवान को आशीर्वाद करंतु एतिके मोर प्रार्थना आज एतिके आज पे। नमस्कार। थैंक यू। कृष्णा रानी नमस्कार। पुष्पापा तो उणाधिके महापात्र विषय कहले मु मोर व्यक्तिगत अनुभूति कहबी। 2004 मसीह आम फैमिली कुन्नानी और हेमंत भाईना मो देढ़शुर घरे रही से महापात्र को रीना फैमिली आसिले मो देढ़शुर दुआर खोले आम नुआ से भाईना जैकेट नहीं रखिले कहले पचारे श्रीनिवास आम भौणी की ठीक रखीच तो ना आम पुरिया लोग तुमको छाड़ू से तो मुझे आश्चर्य कली मुझे अरे ये की कथा ये किए से चलीगले बहुत तरतर हो कुंडानी मत कहले श्रीनिवास माछ बहुत भल पाती केक पैक कर चलीगला मुझे मो हजबैंड शिशिर को पचारि मुझे भद्रलोक किए से मत कहले ये होती श्रीनिवास महापात्र ये होती एक्चुअली प्रवासी ओडिया ये बेंगल वेस्ट बेंगल बढ़ी डाक्तर आ सॉरी लंडन में थिले आसते समर कटेवा को पुरी को आ रीना को देखले से टिपिकल पुरिया भाषा कहले सीधा देखी कहले ये झील को बाहर उड़े कि सीधा नहीं लंडन आमे समस्त मोर मन अच्छी देवेश रितेश निकी
राजेश समस्ते तले थी एत जोरे समस्त हसिलु जे मो हजबैंड का कथा शुणिक मो हजबैंड कहले अरे छात उड़ी जीव तू एत जोरे भाईना छात उड़े दबु ना कौन सो एनीवे मु सब फंडली सब बेले महापात्र को कहे जे बांगाली दादा तापर तांका संगे मोर एक्चुअली बेसी क्लोज कांटेक्ट आसला रीना जते बेले प्रेसिडेंट हितला तांका स्त्री रीना महापात्र तापर होची आपणकर जो ओसा कन्वेंशन रे बहुत से थिले कल्चरल कमिटी रो आउ गोटे बहुत 10 दिन कल्चरल मीन्स अच्छी आ ओसा कन्वेंशन गोटे अनुरोध आसला जोटा कि ताकू दबा भी पड़ो 5 मिनिट स्लॉट से प्रोग्राम प्रिंटिंग को चल जाइला मु श्रीनिवास हमको डाकिली मु कहली आज्ञा श्रीनिवास भारी स्ट्रिक्ट लोक मु जानी तापर मु तांको कहली विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अपोलॉजी आपन गोटे अनुरोध करबी आपन मना करबेनी से कहले आपन मु जानी तो आपन लॉयर किंतु मु जानि नथिला आपन पॉलिटिशियन बोली इंडियन पॉलिटिशियन पर आपन कथा कहउछथि तापर एनयूएस 45 मिनिट पर जहा हो से राजीव ही वाज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग मत बहुत रेस्पेक्ट लगे आ रेस्पेक्ट आम दौ कारण परिवार संगे आम गोटे डिफरेंट टाइप संपर्क कारण माने मोर हजबैंड का फैमिली से माने पुरी से माने होचंती रीना भी पुरी श्रीनिवास बाबू भी पुरी लोक एक्चुअली दे टॉक द वे दे टॉक एक्जाक्टली टिपिकल पुरी ओडिया स्लैंग सागरे एबे मो झील जिते आनाबर रहा एनीथिंग आई वांट डाकी जे रीना यहाँ दरकार श्रीनिवास बाबू समटाइम्स धरती फोन कहे कौन तुम्हें खाली पेरेंट आमे भी गोटे तो सेट ऑफ पेरेंट दैट मेड मी सो फील बैड ऑल द टाइम एंड बहुत अनुभूति सागरे से गोटे बड़ कला प्रेमी थे जोटा कि पुष्पापा ऑलरेडी कही सारी कि एनी ऑर्गेनाइजेशन एवर रिक्वेस्टेड एनी हेल्प श्रीनिवास बाबू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प सो मुझे कहीकि रखुची जोगेश जोगेश को दौर कहवाक थैंक यू सो मच Thank you. Like me, I'm sure everyone is still recovering from the shock. I mean, those who knew him, his passing was a great shock. I had the privilege of knowing this good man and friend for about 10 years. Actually, I met him at a OSA picnic. This is one of the greatness of our gatherings, and we get to meet new people and all that. So I think those who know him kind of see him as a quieter man from outside and all that until they engage in conversation with him. I would describe him as a rationally passionate man, meaning he had passions like others have mentioned, like kala and art and politics, and besides his own profession. But he would always back up, vigorously back up his standing, his opinion with a thorough knowledge on the subject. The quote unquote the thorough knowledge. I mean, I was always impressed with him. It was a pleasure always to engage with him in conversation. One other thing, others have mentioned his love for art and other things, but one of the things I'm going to say that the man had also great appreciation for beer and had a good eye for beautiful women. One of the things, that I'll back that up by, he married the college queen of Puri College. Actually, I don't know if some people may not know here that Rinani was the college queen. So he had a good eye for beautiful women. But the man, one of the things I really learned, the great thing about him that I learned is actually at his funeral. I saw how many lives he touched. And one thing great about him is that he never would talk about his accomplishments, his achievements. He would never talk about it. Such a modest man, and yet had touched so many lives, climbed so high up in the ladder in his own profession, and his artist friends had such great admiration for him. So those are the things we will cherish here.
Certainly, one of the things I will mention here, that he was a great friend of Michigan OSA. Not just a member, but a contributing member, an active member who always took part silently took part, supported causes that we try to do through Michigan OSA. One example I will give, because it will not be fair if I leave this without saying that during Puspappa's presidency, I was the secretary, and Puspappa had, I think, gone to India for a short time or something during that time. It was back in, I think, 2004, I think, that time period. Dr. Kelu Mahapatra, Padma Bhushan Kelu Charan Mahapatra, and Dr. Ileana Sitaristi, two great Odissi dancers. They were coming, and we were going to bring them and all that. I was nervous about it, but we were going to bring them. And one of the things he said, Jogesh, I will give my full support to this. Let's have this program. And he was, I am going to say, many people that are here worked hard for that success of that program. But without that man, that program would not have been successful. I can tell you that. So I have great respect and tremendous admiration for him. And at the end, I am going to pray that Rinani and Rahul and Arun, may they find the strength and to endure his loss. He will be greatly missed and remembered by all that knew him. So with that, I thank our president for giving me the opportunity to speak about him. Thank you. Thank you, Jogesh Vaina, Krishnani, Puspappa. ताको विषय श्रीनिवास डॉक्टर श्रीनिवास महापात्र विषय हमको कही मुझे आउ थे थैंक यू कहूँ. सो एबे मो समस्त को अनुरोध करी डॉक्टर श्रीनिवास महापात्र श्रद्धांजलि आम किछि मुहूर्त किछि क्षण टिके छिड़ा है नीरवता रक्षा करिया. साइलेंस, मोमेंट ऑफ साइलेंस प्लीज.